Welcome to Raj Malhotra's IS Academy. I'm Surbhi Sardana and this is Prelims Sprint 2022, where we teach you the most essential topics you need to learn to crack prelims this year. This is the second last lecture, second last discussion for Prelims Sprint 2022. Tomorrow we'll take the last lecture and as demanded by you, today we are covering space missions. आज हम NASA के space missions cover करेंगे जो कि important है UPSC point of view से. And tomorrow we'll be covering space missions of ISRO and other space agencies of other countries. So starting very quickly, the first one is the Artemis mission. Artemis it is the Greek name of the goddess for moon. So Artemis mission is named after the Greek goddess of the moon and she is the twin sister of Green god Apollo. This information is not important, it is just to remember, to put that in your mind कि Artemis mission किससे related है. It is also known as the moon mission of NASA. So what is their purpose? What they want is they want to send people to moon's surface, especially जो south pole है moon का, towards the south pole of moon. ये जो southern area है moon का, this is relatively unexplored. India ने भी mission भेजा था and we plan to land it near the south pole of moon, but it could not be landed. जो India का mission था. So every country is trying to explore the south pole of moon क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी सारे रिसर्चेस कैरी आउट किए जा सकते हैं जो कि यूनिवर्स की या जो मून और अर्थ का जो सिस्टम है उसके बारे में हमें काफ़ी फैक्ट्स बता सकते हैं. सो इट इज़ अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम दैट इज़ बीइंग लेड बाय नासा विद मल्टीपल इंटरनेशनल एंड यूएस डोमेस्टिक पार्टनर्स. सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं, बहुत सारी JAXA इज इन्वॉल्व, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज इन्वॉल्व, मैनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दिस. Primary goal is to take humans to the south pole of moon and by 2025. Artemis program is in 3 stages. Artemis 1, 2 and 3. जो आपका फर्स्ट वाला है दैट इज़ अनक्रूड. फर्स्ट मिशन में आर्टेमिस 1 में कोई भी ह्यूमंस नहीं जा रहे हैं, जस्ट टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ आर बीइंग चेक. जो एक पाथवे है, गेटवे है या जो कैम्प्स है वो डेवलप किए जा रहे हैं मून के ऑर्बिट में या मून के सरफेस पर. सो इफ सक्सेसफुल इट विल इंक्लूड द फर्स्ट क्रूड लूनर लैंडिंग मिशन सिंस अपोलो 17 which took place in 1972. So this is an important fact to remember कि अपोलो के बाद मून लैंडिंग ऑफ ह्यूमंस हैज़ नॉट हैपेंड by NASA ने नहीं किया. So this is the next mission that it is carrying out. This is a demonstration. ये अर्थ है, ये आपकी मून है and see यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दैट फ्रॉम वेयर दे विल बी लॉन्चिंग स्टेप्स 1 2 3 4. दिस इज़ टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑर्बिट कि किस ऑर्बिट में जाएंगे, कौन कौन से जो बॉडीज़ हैं जिनका ग्रेविटी यूज़ किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें डिप्लॉय की जाएंगी. वॉट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज़ द ओरियन स्पेस क्राफ्ट विच विल बी यूज टू कैरी पीपल, कैरी ह्यूमन्स टू द मून. ओरियन स्पेस क्राफ्ट है, SLS रॉकेट है. इट इज़ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ बीइंग डिप्लॉयड बाय नासा इन द Artemis 1 स्पेस मिशन to launch the Orion spacecraft. The third one is CubeSats. सी ये आपका मून है, मून के नियर बाय ऑर्बिट में कुछ क्यूबसैट्स डिप्लॉय की जाएंगी. तो ये जो एक गेटवे डेवलप करना चाह रहे हैं मून के अराउंड, सो दैट इट कैन सर्व एज अ स्टॉपिंग पॉइंट फॉर पीपल और फॉर एनी डिवाइसेज और सैटेलाइट्स दैट आर बीइंग लॉन्च. तो यहाँ पर जो गेटवे डेवलप किया जाएगा उसके लिए क्यूबसैट्स लॉन्च की जा रही हैं रिसर्च कैरी आउट करने के लिए. एंड वन ऑफ द क्यूबसैट होती है बहुत छोटी सैटेलाइट्स बेसिकली. सो वन ऑफ द क्यूबसैट वॉज इन न्यूज़, इट वॉज कॉल्ड द केपस्टोन. वी लर्न अबाउट दिस. It has been in news since April, so that is very important. First of all, let's cover Artemis 1 जो कि अभी process में है. Let's cover this in detail. It was formerly known as the Exploration Mission 1. तो अगर आपको ये भी आता है Exploration Mission 1, you must understand that it is the moon mission of NASA. So Artemis is an uncrewed, जो फर्स्ट मिशन है दैट इज़ uncrewed. इसमें कोई भी ह्यूमन बींग्स भेजे नहीं जा रहे हैं. इट इज़ द फर्स्ट ऑफ नासाज डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स. जो अर्थ मून के सिस्टम को, अर्थ मून के सिस्टम से बाहर जाने के लिए या जो आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए है, दैट इज़ इट इज़ द फर्स्ट deep space missions of NASA. Purpose is, as I told you, that to land humans on the moon by 2024 and also plans to land the first woman and first person of color on the moon. So that is very important. इससे फ़ायदा क्या होगा, जो मार्स पर अभी कोई भी ह्यूमन बीइंग लैंड नहीं किया है, मार्स पर जो भी है रोवर्स भेजे जाते हैं, या मिशंस भेजती हैं सब कंट्रीज़ अपनी. सो द लर्निंग्स फ्रॉम दिस मिशन, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉस्टली एंड वेरी एक्सपेरिमेंटली
एक्सपेरिमेंटली गुड मिशन कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो इसमें एडेड है दैट इज़ ऑफ वेरी हाई क्वालिटी. सो थ्रू द लर्निंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन, एज यू कैन सी, there are many stages involved in this. These stages are not very important, but if you can see कि काफ़ी सारा जो development है that is different from the previous missions that have been carried out with by other countries. So this all experience will be used to send human beings to Mars, या जो Mars पर research capabilities हैं उनको improve करने के लिए. So what they plan is, first of all, they will establish an Artemis base camp and on the surface of the moon, and a gateway in the lunar orbit to aid exploration by robots and astronauts. So these two are the very important things that they plan to launch here: the base camp and the gateway. So this is something you have to remember. The gateway is a critical component of NASA's sustainable lunar operations and will serve as a multi-purpose outpost orbiting the moon. मून को ऑर्बिट करता रहेगा ऐसा आउटपोस्ट होगा. वहाँ पर सैटेलाइट्स लैंड कर सकते हैं, जो आपके रॉकेट्स हैं वो लैंड कर सकते हैं, एंड फ्रॉम देयर ऑन दे कैन कैरी ऑन देयर जर्नी टू द सरफेस ऑफ मून. सो गेटवे की डेवलपमेंट के लिए क्यूबसैट्स हैं. हम ओरियन के बारे में पढ़ते हैं, विच इज़ द रॉकेट दैट इज़ बीइंग यूज्ड टू send humans to space. So it is a human spacecraft for deep space missions that will usher in a new era of space exploration. It will serve as an exploration vehicle. सिर्फ मून के लिए नहीं, आगे भी जो research capabilities improve करने के लिए और planets पर भेजने की कोशिश करेंगे उनके लिए भी. So during their missions to provide safe re-entry मून पर लैंड करने के लिए, मून पर जाने के लिए, and safe re-entry into the surface of the earth. So this is a very high-tech rocket or whatever you can say. Apart from this, Capstone hai. This is the recent CubeSat that has been launched by NASA. It is a very small satellite weighing just 55 pounds. It will serve as the first spacecraft to test a unique elliptical lunar orbit as part of this Capstone system. जो gateway हम develop कर रहे हैं lunar orbit के लिए. See here, elliptical orbit में gateway develop कर रहे हैं इधर. It will serve as a station to rest for some time, rest for astronauts, या यहाँ से आगे जो landing capabilities हैं उनको improve करने के लिए. This is an elliptical orbit here. ये आपका gateway orbit होगा. So to check out this Capstone satellite has been launched, and it is an outpost. Gateway is an outpost that is part of NASA's Artemis program. So it will reduce risk for future spacecraft by validating innovative navigation technologies. तो जो हम आगे महंगी टेक्नोलॉजीज नासा लॉन्च करने वाला है उसको कम लेवल पर चेक करने के लिए छोटी सैटेलाइट लॉन्च की गई है, एंड इसके अलावा भी काफ़ी लॉन्च की जाएंगी. Now let's study about the NASA's mission to Venus. See, there is a 4 missions program that was suggested by NASA itself. तो 4 missions थे. They said कि स्पेस में ऐसी काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ पे हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है. सैटर्न का जो मून है ट्राइटॉन, दैट वाज देयर. वीनस के 2 मिशंस थे. सो देवर द 4 मिशंस प्रोग्राम था नासा का. उनमें से 2 मिशन सिलेक्ट किए गए हैं जो कि नासा कैरी आउट कर रहा है. सो नासा सेलेक्ट्स 2 मिशंस टू स्टडी लॉस्ट हैबिटेबल वर्ल्ड ऑफ वीनस. तो वीनस का जो एटमॉस्फेयर अभी है, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट वाज अ हैबिटेबल प्लैनेट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एंड टू चेक दैट व्हाट हैपेंड टू दिस प्लैनेट, कि इस पर अब लाइफ क्यों नहीं हो सकती, वाई लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट. 2 missions have been launched by NASA. The first one is Da Vinci Plus, and the second one is Veritas. So it is part of NASA's Discovery program. This is something you have to remember. The missions aim to understand how Venus became an inferno-like world when it has so many other characteristics similar to ours. Earth जैसे characteristics इतने सारे हैं, तो ये inhabitable कैसे हो गया, and may have been the first habitable world in the solar system, complete with an ocean and Earth-like climate. So just remember the name of these 2 missions, and the details we'll be studying in a little while. Discovery program क्या है? It started in 1992 to give scientists the chance to launch some missions that use fewer resources and have shorter developmental time. So discovery programs में फंडिंग कम होती है और
रिसर्च का टाइम कम होता है, बट ऐसे एरियाज जो कि अनएक्सप्लोर्ड है एंड बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कॉज करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में या रिसर्च में, या हमारे जो आंसर्स हैं स्पेस रिसर्च से रिलेटेड, तो उसके लिए डिस्कवरी प्रोग्राम 1992 में लॉन्च किया गया था एंड दीज टू आर पार्ट ऑफ डिस्कवरी प्रोग्राम इटसेल्फ. सो लेट्स स्टडी अबाउट द विंची प्लस फर्स्ट. The VINCI stands for Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging. 1978 के बाद Venus के atmosphere को study करने के लिए this is the first mission that NASA has launched. Also, this mission will try to understand Venus की जो composition, it is made up of gases, so it will try to understand that, and it will see how the planet formed and evolved as well as determine whether the planet ever had an ocean. एक तो ओशियन का जो एग्जिस्टेंस है ये स्टडी करने के लिए, दैट वेदर देयर वाज एन ओशियन दैट वाज फुल ऑफ वाटर, सो दिस विल बी स्टडीड, दिस विल बी चेक्ड और रिसर्च अपॉन थ्रू दिस मिशन. ऑल्सो इट विल एक स्फेयर प्लंज इन कर जाएगा वीनस के एटमोसफेयर से, इट विल गेट इनसाइड देयर and it will make precise measurements on the noble gases, on the composition of noble gases. As the name indicates, investigation of noble gases will be carried out, and other elements to understand why Venus's atmosphere is so, you know, destructive, disastrous. Sulfuric acid के fumes होते हैं Venus के atmosphere में. So why is it like that? It is the first mission which will try to find out, try to take for high resolution pictures of this planet, and there is a geological feature on Venus called tesserae, which is very similar to the continents on Earth. जैसे कि continents divided हैं Earth पर, we have land masses. So if pictures of tesserae can come out, it can give us validation that yes, plate tectonics भी Venus पर active है. So the first thing that you have to remember here is noble gases, second is prediction whether there was an ocean or not, and the third is high resolution pictures of tesserae which may be comparable to Earth's continents, and their presence may suggest that Venus has tectonic plates just like the Earth. तो Earth से similar जो भी features हैं, whether it's water, tectonic activity, presence of gases, whatever is there, that will be researched and experimented through this Da Vinci Plus. The second one is Veritas, that stands for Venus Emissivity, Radio Science, INSAR, Topography and Spectroscopy. ये basically उसके geological functions, geological features और topography देखने के लिए. It will orbit around the Venus and it will check that whether plate tectonics are there, volcanic activity है या नहीं है. Also, it will also map the emissions from Venus surface that may help in determining कि किस तरीके के rocks हैं, whether they are रेडियो एक्टिव रॉक्स, किस तरीके के एमिशंस हो रहे हैं वीनस के रॉक्स से. सो इट विल ऑल्सो डिटरमिन इफ एक्टिव वॉल्केनोज आर रिलीजिंग वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी अगर वाटर वेपर्स मिल जाते हैं. The next one is the Lucy mission, and a very important and a recent mission of NASA. What is it about? First of all, let's learn about the Trojan asteroids. See, this is a picture of solar system. Here at the center of the solar system is the sun, then we have Mercury, Venus, Earth, Mars, and here we have Jupiter. Jupiter के ही orbit में we have some asteroids. Like जो Mars और Jupiter की belt है, there are also asteroids present, but Trojan asteroids जो होते हैं, they are in the orbit of Jupiter. As you can see here in green. दो पार्ट्स में है ये, Lagrangian points पर located है. So Lagrangian points is what you don't have to get into the details if you are a non-science student. Just remember कि दो पार्ट्स में, and these positions are known as the Lagrangian points. तो यहाँ पर asteroids हैं Jupiter के orbit में, these are known as Trojan asteroids. और in to study these asteroids, Lucy mission has been launched, and this is the first mission of NASA that has been launched to study Trojan asteroids. So Trojan asteroids or Jupiter Trojans are a group of asteroids that share the planet Jupiter's orbit around the sun. Jupiter की orbit में है. They are basically time capsules. Earth का outer planets का जो origin होता है वो इन्हीं से माना जाता है, that these asteroids came together and they formed the planets. So they are basically time capsules. They can reveal the history of our solar system. And for more than 4 billion years ago, the swarms of Trojan asteroids associated with Jupiter are thought to be remnants of the primordial material that formed the outer planets, जो कि आपके बड़े outer planets हैं beyond Mars, और so उन planets की formation में इनका role माना जाता है. So if their topography, if their composition can be studied, and जो बाकी बाहरी planets हैं उनकी composition study की जाती है, then we can actually relate कि
क्या इन्हीं से वो प्लैनेट्स बने हैं या इन ये ट्रोजन एस्टेरॉइड्स का रोल क्या रहा है हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन में. सो दे ऑर्बिट अराउंड द सन इन 2 लूज ग्रुप्स विद 1 ग्रुप लीडिंग अहेड ऑफ जुपिटर इन इट्स पाथ. एज यू कैन सी, वन इज ahead of Jupiter, the other trailing behind this one. So clustered around the 2 Lagrangian points equidistant from the Sun and Jupiter, the Trojans are stabilized by the Sun and its largest planet in a gravitational balancing act. कुछ gravitational force होनी चाहिए इनको balance करने के लिए. So Jupiter की balancing force itself and the gravitational force of Sun, इन दो planets एक हमारे Sun की और Jupiter की gravity act करती है and it puts them in, keeps them in place. So what is this mission around? Lucy will be the first space mission to study the Trojans. NASA का ही नहीं, for the first time in history of mankind, this will be the first mission to study the Trojans. After receiving boost from Earth's gravity, so this explains you कि कैसे ये जाएगा. 7 जो studies होंगी, they will be carried out on 7 Trojans and one of them will be between the orbits of Mars and Jupiter, जहाँ पे सारी आपकी asteroid belt है. So it will be the first solar powered mission to venture this far. इतनी दूर जाने वाला solar powered first mission होगा from the sun and will observe more asteroids than any other spacecraft before it has done. So this is broadly about Trojan asteroids and Lucy mission. Match the following or a separate question can be expected from here. Just remember about the details. The next one is the DART mission. This has been in news for the past 4 years at least. So what is it about? काफ़ी जो asteroids होते हैं, there are many asteroids which can be harmful to Earth. It is predicted by scientists or astronauts कि एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि एक asteroid hit कर जाएगा Earth को and human beings will go extinct. So to prevent such an occurrence, we have NASA has brought up this DART mission कि एक XYZ asteroid पर एक spacecraft भेजकर देखते हैं, एक rocket भेजकर देखते हैं to either destroy that asteroid completely or to turn its direction. कि आने वाले टाइम में अगर Earth की तरफ Earth को कोई भी asteroid hit करने की कोशिश कर रहा है तो हम उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस एस्टेरॉयड की डायरेक्शन चेंज कर दें और वो अर्थ को हिट ना करे. सो दैट इज़ व्हाट इज़ इट अबाउट. दे हैव रिसेंटली टेस्टेड it on one of this asteroid Dimorphos, which is a part of larger asteroid named Didymos. ये orbit करता है Didymos के around. So this was a non-harmful asteroid. So Dimorphos का अगर question आता है कि whether it was a harmful asteroid and it has been redirected with the efforts of NASA, no. Dimorphos was not a harmful asteroid. It was just safe to be tested कि अगर ये destroy होता है या इसकी direction change होती है, so it will not impact the Earth. Otherwise also it was not harmful for the Earth, but this has been taken as the testing asteroid. So NASA and SpaceX launched DART, first planetary defense test mission. So this is from November 4, 2021. It is the world's first full-scale mission to test technology for defending Earth against potential asteroid or comet hazards. So it is a planetary defense-driven test of technologies for preventing an impact on Earth by a hazardous asteroid or comet. It is a suicide mission. Basically जो आप rocket भेजते हैं या जो आप space vehicle भेजते हैं, it gets destroyed in that mission. But वो उसकी फोर्स से जो एस्टेरॉयड होता है वो रीडायरेक्ट हो जाता है. दैट वुड अलाउ अ स्पेसक्राफ्ट टू क्रैश इनटू एन एस्टेरॉयड एंड चेंज इट्स कोर्स. सो दिस इज ब्रॉडली अबाउट दिस particular test. Just remember the word Dimorphos and Didymos. They are asteroids and Dimorphos was a non-harmful one. The next one is Perseverance. Perseverance has been in news for quite a while now. So it is the Mars mission of NASA. Perseverance, Curiosity और जो इसके कुछ एक हेलीकॉप्टर है which was sent with the Perseverance mission of Mars to from NASA. So let's read about the objectives of this particular mission. इससे पहले नासा ने क्यूरोसिटी भेजा था मार्स के ऊपर, उसमें कुछ चेंजेस किए गए, some upgradation was done and this mission was sent to Mars in 2020. So whatever researches or experiments have been carried out by various space agencies in the past few decades, they have indicated that Mars was once very different from the cold or dry planet that it is today. उसमें water availability was there, water was plentiful there and life could have been possible at Mars. तो इसीलिए इतना research किया जाता है. So this mission is one of them.
this Perseverance rover is designed to better understand the geology of Mars and seek signs of ancient life. बहुत साल पहले, millions of years ago, कुछ भी अगर life exist करती थी वहाँ पर, what are its key objectives? This part is very important. Explore a geologically diverse landing site, very much obvious. Assess ancient habitability as we've just studied. Seek signs of ancient life, particularly in special rocks known to preserve signs of life over time. Gather rock and soil samples that could be returned to Earth. So ये जो rover होगा जो कि Mars के surface पर travel करेगा, this is the Perseverance rover. जो rover send किया गया, it will actually traverse on the surface of Mars. ये काफ़ी rock और soil samples collect करके एक जगह पर रख देगा, which can be brought back to Earth by a later mission. So gather rock and soil samples that could be returned to Earth by a future NASA mission and demonstrate technology for future robotic and human exploration. So where has this Perseverance rover landed? It has landed on the Jezero crater on Mars. So if a question comes that where is the Jezero crater located, you should definitely know about its location. Why Jezero crater? Because it is an ancient river delta containing rocks and minerals that could be formed only in water. तो हम water की presence check करना चाह रहे हैं. So this place was the best landing site because it has been told कि ये जो river delta है, it could be formed only in the presence of water. So Jezero crater is where Perseverance has landed. There is also a helicopter called Ingenuity, which is part of the Perseverance mission. तो जो helicopter है, that will check the surface and whatever the gases are available there. So that is part of it. Perseverance is the first time that the mission includes a drill that can collect core samples of rocks and soils and store them in a cache on Martian surface. जो कि ये बाद में जो भी mission होगा उससे भी rock samples और soil samples Earth पर वापस लेके आ सकते हैं. And this is the first time that the rover has directly recorded the sounds of the planet Mars. See, sound waves are very important. Sound waves से या किसी भी तरीके की vibration से हमें एक planet की activity पता लग जाती है, वहाँ पर किस तरीके के rocks available हैं, क्या chemical reactions हो रहे हैं, that can be predicted on the basis of that. So these vibrations are very important. The next one is the Parker Solar Probe. This is NASA's mission to study the solar coronae. जो कोरोना है दैट इज़ अ लेयर ऑफ सन्स सरफेस. सन का कोई हार्ड कोर सरफेस नहीं है, बट कोरोना इज़ द आउटर लेयर एंड वहीं से सोलर विंड्स आती है. सोलर विंड्स क्या करती हैं? सोलर विंड्स और सोलर स्टॉर्म्स व्हेन दे कम फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे आर बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन. सो दे व्हेन दे कम और एंड रीच द अर्थ सरफेस और द आउटर layer of our Earth's planet, they affect the magnetic field of Earth as well. जो आपका aurora होता है, aurora borealis and aurora australis, so that is formed due to the solar storms के साथ जो reaction होता है Earth के magnetic field का. या जो हमारी satellites होती हैं वो functioning बंद कर देती हैं, हमारे communication systems वो functioning बंद कर देते हैं जब solar storms आते हैं. So to study that, to predict solar storms, this Parker Solar Probe has been launched. It is NASA's Parker Solar Probe mission is the first in history to fly through the sun's outer atmosphere known as the corona. And the recent update was that for the first time NASA का जो ये probe है, it has officially touched the sun. जो corona layer है उसको touch कर लिया and plunging through the unexplored solar atmosphere known as the corona. So whatever its purpose was, it has done there. It will stay for a few more years and keep sending us updates on that. It has also shared images of Venus, which displaying beautiful continents, plains, plateaus, and even a layer of oxygen. So that is a very important update. Significance we have studied. हमारे लिए solar storms और solar flares को study करना बहुत important है for our existence on this planet and to predict solar storms well in advance. So this is the purpose of this particular probe. The next one is the Juno mission. It is NASA's mission to Jupiter. It was launched long back in 2011. 2016 में ये land किया Jupiter पर. Obviously it takes time for a probe or for a rocket to like move out from the surface of the earth. उसकी gravity में फिर काफ़ी सारे जो आगे planets आते हैं या asteroids आते हैं उनकी gravity में revolve करता है एक rocket या जो भी probe होता है, and then it reaches its destination. So it reached its destination that is Jupiter on 5th July 2016, 5 years after its launch. So what are its objectives? To investigate the planet's formation and origin, to find out the amount of water present in its atmosphere. See, water is something we are looking for everywhere because water indicates presence of life.
to learn whether Jupiter has a rocky core or not, to find out, see these are jovial planets, जो outer planets होते हैं, Jupiter, Neptune, Uranus, these are jovial planets, Saturn including that they form of gases, कि इनमें rocky surface नहीं है. So to check that, it will be there to learn whether Jupiter has a rocky core or not, to find out more about Jupiter's mass distribution and deep winds. जूनो जो है जुपिटर पर नासा का सेकेंड मिशन है. द फर्स्ट वन वॉज गैलीलियो विच वर्कड फ्रॉम 1995 to 2003. सो आफ्टर 2003 अ डेकेड लेटर दे डिसाइडेड कि हम एक नेक्स्ट मिशन भी भेजेंगे, दैट वुड बी जूनो. सी we have discussed them very shortly, but we've discussed all the important aspects of these missions. Tomorrow we'll be covering some more of them, and tomorrow we'll be ending prelim sprint, and then you have to just continue with your revision. If you're not able to watch the videos and कोई ऐसा topic है जो आपका रह गया है, just directly go to our Telegram channel, type prelim sprint there, and आपको PDF मिल जाएगा जो कि सारी यहाँ पर lecture discussions होती हैं. और in the description of our YouTube videos itself, we give you the link of for downloading the PDF for a particular presentation. Download it from there, go through the PDFs again and again, revise what you have studied from there. Also, Raj sir himself took a short lecture of 8 minutes on Saturday on what to do in the last week before prelims. So make sure that you follow that, you follow all the 8 rules he has discussed there, and keep working hard. All the best for your exam. It's the final, I think it's the final lap of your preparation. So don't lose heart, keep working hard and stay positive.